अस्सलाम वालेकुम अतीका जी। वालेकुम अस्सलाम। How are you and how does it feel to have played such an iconic character such as Mansoorah Begum? इतनी appreciation character को आपकी acting को मिली और इतनी तनकीन और इतनी opinions आपके character के बारे में. Were you expecting this? So firstly, I think I'm quite spoiled. I'm spoiled, Amna, because in my 30 years of a career, I've had very few projects out there that have not been successful. And I'm so blessed and so privileged कि मेरे इतने सारे hit हुए हैं अपने 30 साल में कि जब ये होता है तो मैं अल्लाह मियां माफ करे मुझे, but I sometimes feel like I take it for granted now, you know. Of course, I'm delighted that the serial is such a big hit. I'm thrilled that Mansoorah has become somebody people have sort of followed and like where she's going now or where she's gone at the end with her family and her value system. So obviously बहुत अच्छा होता है. It's a great feeling to be acknowledged and to feel appreciated and to be successful. But I definitely am spoiled, and I'll be honest about it because Allah ने सितारा मेहरुन्निसा से लेके दाश, निजात, हरजाई, हम सफर, अब प्यार के सदके, तो पता नहीं कुछ मैंने अच्छा काम अपनी जिंदगी में किया होगा जो अल्लाह में मुझे बार-बार ऐसे मुझे किसी चीज का सिला देता है फिर. बट अतीका जी, जब आपके पास आया प्यार के सदके और मंसूरा, इट्स नॉट अ कन्वेंशनल प्ले इफ यू लुक एट इट. आई मीन कैरेक्टर्स और स्टोरी आप कह सकते हैं कि कन्वेंशनल है, बट इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, इसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल अलग तरीके से हुई हुई है. एंड इस सारी चीज में मंसूरा का कैरेक्टर ऑफ कोर्स इज सेंट्रल टू द एंटायर ड्रामा. तो जब आपके पास आया, आपको लगा कि ये मंसूरा चूज करके आप कोई रिस्क ले रही हैं, या अब आपको आदत हो गई, अब आप समझती हैं जैसे आपने कहा कि इंशाल्लाह सक्सेसफुल तो होना ही है, तो क्यों नहीं ये भी करके देख लेते हैं? नहीं, so I have there's no guarantee. मुझे ये नहीं लगता कि कोई चीज चलेगी या नहीं चलेगी. मेरा सिर्फ ये कि इंसान काम करता रहे और मेहनत करते रहे और वो फिर अल्लाह मियां पे ऑडियंस पे होता है. अक्सर आई कम अक्रॉस दीज यंग किड्स और वो क्या करते कि नहीं जी पता नहीं हम ये डिटेल देखेंगे, वो देखेंगे, ये देखेंगे, और वो कोई 6 साल निकल जाते हैं. लाइक I've just done some work with Fuad Khan. I'm like, why haven't you done more work since you've come back from India? And he's like, no, I'm this. I said, Fuad, these are prime years. You're missing out. Don't do this. आप काम करते रहें. Leave it to the audience and leave it to your fate and your luck and everything. What happens with it? Because if I had waited around कि जी ये guaranteed successful होगा, तो मुझे क्या पता? किसी को नहीं पता. Writer को नहीं पता होता. Director को नहीं होता. This is all destiny, frankly. As far as Mansoorah is concerned, the reason I signed Pyar Ke Sadke is because I liked Mansoorah. And the reason why I signed majority of my work, some I signed because I need to run the kitchen. I'll be again very honest. There are times when I get a bunch of really bad scripts and I have to choose the lesser bad whatever, like the lesser evil of the lot, because I have to run a kitchen. But Mansoorah या फरीदा हमसफर से ऐसे जो characters होते हैं इनमें मुझे मजा बड़ा आता है, because जब वो आके नरेट करते हैं कि ये जी कहानी है, ये किरदार है, फिर मुझे वो एक 1 लाइन भेजते हैं, फिर मैं एक स्क्रिप्ट देखती हूँ, तो when I just flick through it मोटा मोटा to see कि what is the overall outlook of this woman, तो अगर कोई चीज दिल को लग जाए ना, फिर मैं कहती हूँ यार ये तो मैं करूंगी. बिकॉज देखिए मंसूरा एक बहुत ही, I just loved her. I loved her from day one and I was very clear what I was going to do and how I was going to bring her to life. आपके दिल पे क्या लगा? What struck you about Mansoorah? I love the fact that she was married to a younger man. Right. हमारे ऐसे रोल्स लिखे नहीं जाते, ज्यादा होने चाहिए. Exactly. Because in reality ये चीजें होती हैं. अच्छा, I'm part of that group of people in drama in the community कि जी हमारी ये इतनी आप घिसी पिटी बार बार कहानियां दिखा दें. When will this change? When will you change the scale of the production? When will you change what were the narrative? और हम क्या कहना चाह रहे हैं, अपने हम व्यूअर को कितना बेवकूफ बनाएंगे. ऑडियंस ने सब कुछ देखा हुआ है, सबको अब तो वो ग्लोबली देखते हैं, तो आप किस चीज से उनको सेंसर करके रख रहे हैं. सो मंसूरा की बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, एक तो कि क्योंकि मैंने फरीदा एंड अभी एक रिसेंटली मैंने मोहब्बत ना करियो का एक और रोल किया था, वो जालिम सास, बिकॉज आई बीन स्लॉटेड इन दैट फॉर सम रीजन. आई थॉट इट विल बी नाइस बिकॉज शी इज नॉट अ जालिम सास, शी इज अ वेरी mature,
civilized, बहुत ही संभली हुई औरत है ये, और इसने अपने अपने दिल की ख्वाहिश, उसके शौहर मर गया तो उसके बाद she still a woman, she was still young when the husband died, she had her children to think about, but she had womanly needs, and here was this gorgeous young handsome man, तो उससे शादी की, तो obviously she had physical needs, emotional needs. तो मैंने मंसूरा को बहुत गौर से जब पढ़ के मैंने सोचा it would be so amazing to play her, because from start, middle and end तक मुझे पता था कि मैं उसको शुरू कहाँ से करूँगी और end में कहाँ तक लेके जाऊँगी, because until unless I don't feel I have a real sort of graph, a real sort of peak with a character, I don't enjoy her either. So I love the fact she was an older woman, frankly. आपने अभी एक बात की कि मंसूरा isn't your typical evil सास, but she's not also your good सास. Because एक confusion जो मेरे दिमाग में रही है और आमना ने उसकी clarity दी थी, अब आप बताएं कि आमना ने वो बात सही की या गलत की, कि जब वो turn of एक character हमने देखा मंसूरा के अंदर, जब उसको all of a sudden माजबीन में interest खत्म हो गया है, कि वो she's like, you know, I don't care, अगर वो उसको तलाक देता है या उसको छोड़ देता है तो मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. Was that because Majbeen brought up her relationship with Server and said कि आप ये जो सर्वर ये साहब हैं ये आपसे छोटे हैं, राइट? एज की ऐसी कोई बात उसने की. डैड जो है वो मॉम से छोटे लगते हैं. Was that the reason कि वो माजबीन उसके दिल से उतर गई या कोई और वजह थी? Because वो मुझे पॉइंट अभी तक क्लैरिटी नहीं है उसके ऊपर. देखिए, आई थिंक जहाँ तक मंसूरा स्पेसिफिकली का ताल्लुक है, वैसे तो सारे कैरेक्टर्स ग्रे होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होते. Depends on how the actor sort of emotes it, right? I think Mansoorah's main thing was that she has a lot of complexities in her heart, which she doesn't really necessarily voice. और उसके बारे में मुझे जो बात अच्छी लगी कि हर चीज, देखिए मेरी एक आदत है, I'd like to share with you, मेरे पास स्क्रिप्ट आती है तो वो किताब की तरह लिखते हैं राइटर्स, अब डायलॉग, मैं कहा it's a visual medium, why am I saying so much, why am I talking so much, am I not a good actor, can I not actually just express something by my eyes or my hands or my visual mediums? So Mansoorah had a lot of space to develop a woman who was quiet, sober, intelligent yet emotional. She's a very complicated character, and to play her you had to understand nuances क्या हैं, उसके छोटे छोटे moments किधर हैं. अच्छा, फिर obviously देखो इतनी वो अपने बच्चों को चाहती है. अब्दुल्ला के साथ तो बहुत ही करीब है, चलो वशमा के साथ इतनी नहीं क्योंकि वशमा फूफी के पास चली गई ना, बट बेटे से तो बेहद मोहब्बत करती है. तो वो क्योंकि उसको एक इश्क है अपने मियाँ से, एक वो औरत वाला जो इश्क होता है, एक बीवी वाला जो इश्क होता है, तो वो अब्दुल्ला की भी इतनी सारी चीजें, माजबीन तो बहुत बाद में आती ना, पहले तो आप देखें बेटे के साथ क्या हो रहा है. she lives in denial for so long about what Abdullah is suffering because she's so desperate to keep her man. And it's sad and it's pathetic, but that's majority of our society. I see women in all different class Pakistan all the time. All my characters come out of somebody that I've watched, and it's amazing how much women will give up of their selves and their homes and their lives and their families to keep the man. And in my personal life, I'm totally the opposite. My thing is that, it has to be a partnership. Otherwise, absolutely. I ain't hanging around.